Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड इयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई और MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक कर देबा और चैनल को सब्सक्राइब कर देबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर देबो तापरे वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ाया पई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रे हार्मोनिक मीन ए विषय रे पढिबा ऑलरेडी हमें एरिथमेटिक मीन देन मीडियन देन मोड आउ ज्योमेट्रिक मीन विषय रे पढ़ी सारछु सो व्हाट इज हार्मोनिक मीन सपोज वी आर टेकिंग n number of observation which are x1 x2 up to xn ताले एमानकर हार्मोनिक मीन को हमें एज एब्रिविएशन लिखि परिबा hm और सिंपली h बोली लिखि परिबा which is equal to 1 by n into 1 by x1 plus 1 by x2 plus dot 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 up to 1 by xn. So याको जदि आमे शॉर्ट फॉर्म रे लिखिबा it is small n divided by summation over 1 by x. That means इठी लक्ष्य करो this harmonic mean is nothing but the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the given number of observations. आ जदि आमे एठी frequency distribution को कंसीडर करिबा ताले आमे रेसिप्रोकल को लिखि परिबा हार्मोनिक मीन रो 1 by h equal to 1 by capital M जानिचो it is nothing but the total frequency that is summation of f so 1 by n into f1 by x1 plus f2 by x2 up to fn by xn or 1 by n into summation f by x ताले हार्मोनिक मीन हे गला h equal to capital N divided by summation over f by x ओके अच्छा एटी जो x कहला एटा तुम ऑलरेडी जानजो जदी क्लास इंटरवल अछि ताले हमें मिड वैल्यू को नउथा ओके अच्छा नाउ लेट अस सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल upon the harmonic mean जदि हमें n संख्यक ऑब्जर्वेशन नउचु x1 x2 up to xn and if we say that this variable x is transformed into a new variable suppose u by a scale which is u equal to kx where k is some non-zero quantity okay we can say it is a constant quantity ताले एबे हार्मोनिक मीन न्यू वेरिएबल रे जदि हमें बाहर करिबा 1 by हार्मोनिक मीन ऑफ u याकू एबे जदि फार्मूला लगेबा रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट करिबा ताले फाइनली आसीबो 1 by k into 1 by हार्मोनिक मीन ऑफ x दैट मींस इन अदर वर्ड्स एबे रेसिप्रोकल को हमें चेंज कर देबा सो हार्मोनिक मीन ऑफ u इक्वल टू k into हार्मोनिक मीन ऑफ x okay hence we have the following result जदि u equal to kx हला ताले हार्मोनिक मीन जदि यार बाहर करबो ताले k into harmonic mean of x हबो okay now let us see what are the merits and demerits of this harmonic mean so merits रे हम जदि देखिबा it is rigidly defined it is based upon all the observations and it is suitable for further mathematical investigation आ जदि हमें grouped data देखिबा सपोज दुईटा ग्रुप नउचु हैविंग साइज n1 n2 ताले हार्मोनिक मीन हमें कंबाइंड ग्रुप पई जदि बाहर करिबा व्हिच इज ऑफ साइज n1 plus n2 ताले it is equal to 1 by h equal to 1 by n1 plus n2 into n1 by h1 plus n2 by h2 okay next point रे कहूची मेरिट रे since the reciprocals of the values of the variables are involved so it gives greater weightage to the smaller observations and as such is not very much affected by one or two big observations okay and also it is not affected by very much your fluctuation जदि होची सैम्पलिंग रो ताले भी एते किछि इफेक्ट देखो नाही ताबरे particularly को जगह एटा यूज होची एटा यूजेस रे आछी okay it is useful in averaging the special types of rates and ratios where time factor is variable ओके जो जगह रे टाइम फैक्टर टा वेरी करूची से जगह एटा बहुत यूज होइता आउ इट एक्ट बीइंग परफॉर्म्ड व्हिच इज रिमेनिंग कांस्टेंट राइट अच्छा
तापर एबे डिमेरिट्स देखिबा इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट बोधे जदि नॉन मैथमेटिकल पर्सन पाई ओके सो नेक्स्ट पॉइंट कहूँ इट्स वैल्यू कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इफ एनी वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज जीरो बिकॉज मल्टीप्लिकेशन होची तो जदि गोटे भी ऑब्जर्वेशन जीरो होगला टोटल रिजल्ट को जीरो बनईदेव ओके रेसिप्रोकल करछु माने इनफिनिटी करदेव सो next point it is not a representative figure of the distribution unless the phenomenon requires greater weightage to be given to a smaller items as such it is hardly used in business problems okay uses already ame it is sixth point re dekhi sarchu harmonic mean ko ame specially use korthau in case of your averaging rates and ratios where time factor is variable and act being performed for example যদি distance को ame constant नहीं गला okay so let us now see some of the examples based on the harmonic mean एठी first example रे कहूची गोटे table देला where it gives the weights of 31 persons in a sample inquiry okay and calculate करबा को कहूची mean weight okay mean weight बाहर करो केमती ज्योमेट्रिक मीन रे आ हार्मोनिक मीन रे ओके वेट दे देला नंबर ऑफ पर्सन दे देला ताको हमें नहीं गला एबे वेट को x नंबर ऑफ पर्सन को योर फ्रीक्वेंसी f तापरे ज्योमेट्रिक मीन पई तमे जानि छ हमें log x बार करबा देयर आफ्टर f log x आ हार्मोनिक मीन पई हमें रेसिप्रोकल बार करबा प्रथमे 1/x तापरे f by x आ तळे एबे समेशन देखो यार बाहरी गला ओके हमें समेशन ओवर f व्हिच इज योर कैपिटल n तापरे समेशन ओवर f log x एंड फाइनली समेशन of f by x ओके एतिकी रिजल्ट पाइला परे एबे हमें ज्योमेट्रिक मीन बाहर करि परिबा ओके वी यूज द एंटीलॉग इट्स वैल्यू विल बी 142.5 आ हार्मोनिक मीन रो जहा फार्मूला अछि 142.36 आसीबो ओके सो आई हिसाब रे हमें ज्योमेट्रिक आ हार्मोनिक मीन पाई गला नेक्स्ट प्रॉब्लम रो कहूची गोटे रिलेशन देला दुईटा वेरिएबल भितरे 2u = 5x ओके सो हार्मोनिक मीन जदि x रो होची 0.4 ताले u रो केते हबो ओके सो 2u = 5x ए रिलेशन रो हमें u रो वैल्यू पाई गला हमको ऑलरेडी x रो हार्मोनिक मीन दे देची सपोज हमको पाखरे अछि n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हिच इज कॉरेस्पोंडिंग टू द two types of variables okay so एबे हमें लेखि परिबा इन जनरल ui = 5/2 xi ताले एबे हार्मोनिक मीन जदि हमें u रो बाहर करिबा जोटा कि क्वेश्चन पचार छी ओके डिटेल बाहर कले यार रिजल्ट फाइनली आसीबो = 1 आ जदि हमें जो प्रीवियस इक्वेशन 5.28b रे जो फार्मूला देखुतला जोथरे कि u = जदि kx थिला ताले हार्मोनिक मीन बाहर कले सिंपली k मल्टीप्लाई हो जाउथला ताले देखो ए हिसाब रे भी 1 ही आसीबो ओके मूविंग ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम एबे देखिबा फाइंड द हार्मोनिक मीन of 1/2 2/3 3/4 up to in general এটা হয়ে গেল n/n+1 which are occurring with frequency 1 2 3 up to n respectively তাহলে এবে এই সব ভ্যালু को हमें respectively टेबल रे लिखिला x और f को then 1/x और f/x ओके हमें फर्स्ट रेसिप्रोकल बाहर करिबा हार्मोनिक मीन पाई ओके सो एठी देखो रेसिप्रोकल रो जो फार्मूला टाको हमें लिखि देला ऊपरे गोटे जिंस लक्ष्य करो एई जो न्यूमरेटर अछि ओके एथिरु हमें कोन करिबा एको टिके सजै परिबा एई जो +1 टा अछि +1 टा हमें एठी आकु नै जिबा ताले एठी हे जिवो केते 1 + 2 + 3 + up to n आउ एई जो प्लस n टा गोटे एक्स्ट्रा रहिबो ताले एबे डिवाइड जदि करछु ताले देखो 1 हे गेला एटा आ गोटे क्वांटिटी हे गेला n by this much तमे जानि छो 1 + 2 + 3 + n यार वैल्यू हुए n * n + 1/2 ताको पुट कर दबा सो फाइनली हमर वैल्यू आसिला n + 3/n+1 एटा होची रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन ताले हार्मोनिक मीन हे गेला एबे जदि उल्टे दबा हमें n+1/n+3 व्हिच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू राइट तापरे एबे जिबा हमें जो कथा कहउतला टाइम रेट कथा से रिलेटेड गोटे प्रॉब्लम एटी कहउची a cyclist pedals from his house to his college at a speed of 10 km/h and back from the college to his house at a speed of 15 km/h ताले एवरेज स्पीड बाहर करो मन रखो एठी हमें एवरेज स्पीड जो कहउची जदि एरिथमेटिक मीन बाहर करबा ताले तो सिंपली 10 आउ 15 को जोग करिकि बाय 2 कर देले हबो
किंतु सेमती आम कहबानी ये जेहेतु रेट कौच टाइम रेट हिसाब से चेंज हो डिस्टेंसटा तेणु आमको ये हार्मोनिक मीन बाहर करने को पड़ो ओके सो सपोज आमको जेहेतु डिस्टेंस तो देनी तेणु let the distance between the house and the college is x kilometer okay now हमको क्वेश्चन कहला जे हाउस रु कॉलेज जदि जाऊचु ताले एई डिस्टेंस x को कवर करा जाउची केते टाइम रे x by 10 hours okay because speed होची 10 kilometer per hour while coming back from college to house distance covered हेबे केते जो x by 15 hours okay so total distance covered केते हला 2x kilometer which is covered in total x by 10 plus x by 15 hours okay ताले एबे एवरेज स्पीड आमे बाहर करबा जदि डिस्टेंस टोटल जेतकी जाईची टोटल टाइम जेतकी लागिची ताकू आमे जोगो कर देबा ताले 12 किलोमीटर पर आवर व्हिच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ओके तापरे मूविंग फर्दर some remarks are here okay so in this case as I said the average speed is not the it is the harmonic mean okay not the arithmetic mean okay अच्छा जदि आम ये कहवा इक्वल डिस्टेंस कवर जदि होता पर यूनिट टाइम विथ स्पीड्स which are v1 v2 up to vn then average speed is given by the harmonic mean of this velocity okay so this average speed is equal to n by the summation over the reciprocal of the respective speeds या को प्रूफ भी करा जाय परिबो you can see the proof part right moving further next problem को जिबा a vehicle when climbing up a gradient consumes petrol at a rate of 1 liter per 8 kilometers okay while coming down it gives 12 kilometers per liter then find its average consumption for to and fro travel between two places which are situated at two ends of a 25 kilometer long gradient and verify your answer okay तो देखो जो पेट्रोल कंजम्पशन होची ओके एटा भी पूर्व भलिया ही प्रॉब्लम सो एटा डिफरेंट रोची फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जर्नी ओके बिकॉज एटी डिस्टेंस टा कांस्टेंट होची व्हिच इज 25 किलोमीटर सो एप्रोप्रिएट एवरेज कंजम्पशन जदि एबे बाहर करबा को हमें चेष्टा करबा एटी हार्मोनिक मीन हमको काढिबा को पड़िबो बिटवीन द 8 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर ओके सो एई जो हार्मोनिक मीन जोटा कहूची याको average consumption for to and fro journey it is 1 by it is half into 1 by 8 plus 1 by 12 that means finally our value asila 9.6 kilometer per liter now let us go to verify this answer so consumption जो होची पेट्रोल रो upward journey रे 25 किलोमीटर पाई 1 लीटर पर 8 किलोमीटर रे गला that means consumption हला 25 by 8 liters सिमिलरली डाउनवर्ड जर्नी पाई एबे 1 किलोमीटर सॉरी एबे 1 लीटर गला पर 12 किलोमीटर ताले कंजम्पशन हला 25 by 12 लीटर ताले टोटल पेट्रोल कंजम्पशन फॉर टोटल जर्नी दैट इज 25 plus 25 which is 50 किलोमीटर हे जिवो ए दुटा को जोगो कर देले राइट which is 125 by 24 liters ताले एवरेज कंजम्पशन हे गला केते टोटल डिस्टेंस बाय टोटल पेट्रोल which is used तो याको भी जदी पुट करिवो 9.6 kilometer per liter ही आसीबो which is same and hence the answer has been verified okay तापरे next problem in a certain office a letter is typed by a is some person okay in 4 minutes similarly the same letter is typed by some other person like b c d in respectively 5 6 10 minutes right now what is the average time taken in completing one letter तापर पचराउची जे how many letters do you expect to be typed in one day comprising of 8 working hours okay first part को एबे जिबा एवरेज टाइम हमको पचारुची सो ए बी सी डी पाई गोटे लेटर टाइप करबा को एवरेज टाइम केते बाहरिबो व्हिच इज नथिंग बट द हार्मोनिक मीन अगेन सो टोटल केते जण अछंती 4 जण याको लिखि देला ऊपर ओके तापरे तांकर जो टाइम नउचंती राइट जो एठी हमें देखिबा को पाउछु जे रेसिप्रोकल नहीं गला तापरे रेसिप्रोकल को हम बाहर करछु फाइनली यार वैल्यू हार्मोनिक मीन रे 5.5814 मिनिट्स पर लीटर आसिला ओके व्हिच इज द एक्सपेक्टेड नंबर राइट किंतु एबे नेक्स्ट प्रॉब्लम हमको जो पचारछि
एठी गोटे जिनस मन रख एक्चुअली आमे ये जो हार्मोनिक मीन टा पाइला 5.5814 बा रेशियो जो 240/43 एटा रो वैल्यू टा कोन दिस इज एक्चुअली the time required in order to type one letter. यदि हमें उल्टे दबा reciprocal कर दबा the expected number of letters which is typed by each of A B C D याकू उल्टे देला so 43/240 इजिबो ओके 43/240 letters टाइप होची पर मिनिट रे ओके सो हमको कहूची जे गोटे दिन रे केते लेटर टाइप हो किंतु गोटे दिन माने एठी 24 आवर्स आमे नहीं परिबा नहीं ऑलरेडी हमको कहि दैछि जे वर्किंग आवर होची 8 ओके सो हमको 8 आवर पाई ही शेड्यूल टाइम नेबार अछि सो 8 into 60 मिनिट्स सो हे गला हमरो एबे याको मल्टीप्लाई कर देबा ओके बिकॉज एटा ए बी सी डी ईच पाई होची दिस वैल्यू ओके टोटल 4 जण अछंती 4 मल्टीप्लाई हला आउ 8 into 60 so 344 letters total type ही परिबो वर्किंग आवर भितरे okay now moving further an investor buys rupees 1200 worth of shares in a company each month okay এই প্রবলেমটা arithmetic mean রে भी already তুমি করি সারছো example 5.9 রে okay during the first 5 months he bought the shares at a price of rupees 10 12 15 20 24 per share and after 5 months what is the average price paid for the shares by him एठी हार्मोनिक मीन हिसाब रे जे वैल्यू बाहर करिवो ताले 14.63 आसीबो व्हिच इज द सेम वैल्यू जोटा एरिथमेटिक मीन रे भी बाहर करले तमरो आस्तला ओके अच्छा एति की जाय देखला परे नॉर्मल जो हार्मोनिक मीन नेक्स्ट टाइम देखिबा एबे वेटेड हार्मोनिक मीन वेटेड जेतोला हमें कहूचो we are giving some of the importance in order to weight some of the quantities बा ऑब्जर्वेशन रो इंपोर्टेंस और वेट जाने की हार्मोनिक मीन अबे हमें बाहर करी पारिबा ओके सो instead of fixed or constant distance which is being traveled with varying speeds okay जोड़ा ऊपर हमें एग्जांपल ले देखिला let us now suppose that different distances are traveled with corresponding different speeds and in that case what is going to be the average speed एबे हमें देखिबा so suppose that distance s1 s2 up to sn are traveled with speeds v1 v2 up to vn per unit of time okay यदि हमें एठी टाइम निगला t1 t2 up to tn respectively then this is actually the time taken to cover these distances हमें लिखि परिबा t1 equal to s1 by v1 t2 equal to s2 by v2 up to tn equal to sn by vn right ताले एवरेज स्पीड हमें बाहर करिबा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ओके याको हमें लिखि परिबा ए हिसाब रे ओके सो दिस इज एक्चुअली द weighted harmonic mean of the speeds okay speed रे हमको यदि बाहर करिबार अछि okay corresponding to the weights being the distances covered okay hence if different distances are traveled with corresponding different speeds then the average speed is given by the weighted harmonic mean of the speeds and the corresponding weights being the distances covered okay याकू नहीं कि याकू बेस करी कि उठे प्रॉब्लम इठी देखो you make a trip which entails traveling 900 kilometers by train at an average speed of 60 kilometer per hour then 3000 kilometers by boat at an average speed of 25 kilometers per hour then 400 kilometers by plane at 350 kilometers per hour and finally 15 kilometers by taxi at 25 kilometers per hour what is your average speed बोल के एठी पछारला किछि नै आमे जहा जहा क्वांटिटी देछि x वैल्यू जोटा होछि तमरो डिस्टेंस ताको आमे लेखिबा 60 25 350 25 वेट दे दीछि रेस्पेक्टिवली देखो एठी 900 then 3000 then 400 and 15 ओके एई वैल्यू गुडा को आमे लेखिबा एबे राइट तापरे w by x बाहर करिबा ओके w by x बाहर कर देला परे समेशन एठी समेशन w ताले एवरेज स्पीड रो फार्मूला हिसाब रे हमें जदी आकु लगेबा समेशन w by समेशन w by x which is 31.49 kilometers per hour the required answer
Now what is the relation between ये जो मीन रे आमे देखिला कैटेगोराइज जदि करबा एरिथमेटिक मीन गुटे अछि ज्योमेट्रिक मीन गुटे अछि आ आज देखुछु हार्मोनिक मीन एमान को भीतर रिलेशन कोन एक्चुअली arithmetic mean is greater than equal to geometric mean which is greater than equal to harmonic mean एटी equal to रो भी चांसेस अछि केते बेले रहइबो if and only if the n observations are equal जेते सब n संख्यक ऑब्जर्वेशन ताकू जदि आमे सब ऑब्जर्वेशन को समान नै जिबा ताले एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन सब समान ही जिवो ओके याकू एई रिलेशन को प्रूव भी करा जाय परिबो दुईटा वेरिएबल नै कि देखो याकू प्रूव करा जायछि यू कैन रीड बाय योरसेल्फ राइट मूविंग फर्दर देखो आ गुटे इंपोर्टेंट रिलेशन भी एथिरो हमें पाई परिबा कोन सेटा जे जदि याकू हमें geometric mean रो स्क्वायर नौचु then it is equal to the multiplication of arithmetic and harmonic mean याको भी प्रूव करा जायछि ओके यू कैन रीड इट आउट ओके अच्छा एबे देखो याको बेस करी कि किछरा प्रॉब्लम ए प्रॉब्लम करस the arithmetic mean of two observation is 127.5 and their geometric mean दे देला 60 find the harmonic mean ओके ऑलरेडी ऊपर हमें रिलेशन देखिला ए रिलेशन रे तो इजीली हमें संगे संग बाहर कर देबा एरिथमेटिक मीन जदि दुईटा ऑब्जर्वेशन ताले a plus b by 2 हबो ज्योमेट्रिक मीन कर देले दुईटा अछि सो स्क्वायर रूट ऑफ a into b हबो तबे एठी हार्मोनिक मीन जदि हम बाहर करछु दुईटा वेरिएबल ताले 2ab by a plus b हबो ओके सो एठी हमें ए वैल्यू को फ्रॉम बोथ दिस इक्वेशन पाई परिबा ओके सो विदाउट नोइंग द ऑब्जर्वेशंस हमें एठी बाहर कर दी परला हार्मोनिक मीन को ओके अच्छा तापरे एबे सेकंड बीट रे पचाउची जे फाइंड द टू ऑब्जर्वेशंस राइट एबे दुई ऑब्जर्वेशन ए और बी को बाहर करबा को हमें चेष्टा करिबा एठी हमें यूज करिबा दिस फार्मूला a minus b square equal to a plus b square minus 4ab ए फार्मूला रो हमें a minus b रो वैल्यू स्क्वायर रूट रे पाइगला जेहेतु स्क्वायर रूट अछि प्लस माइनस दुईटा वैल्यू को ये उठेइबो मने करा जाऊ फर्स्ट हमें याको पॉजिटिव रे नेला ताले a और b रो वैल्यू रेस्पेक्टिवली पाइगला 240 और 15 जदि यार वैल्यू को हमें नेगेटिव रे नोचु ताले मध्ये उल्टी जीवो केवल 15 और 240 आसीबो तेणु दुईटा वेरिएबल रो वैल्यू हेगला 240 और 15 राइट तापरे नेक्स्ट प्रॉब्लम जदि ज्योमेट्रिक मीन दुईटा ऑब्जर्वेशन रो होची 1 by n times their harmonic mean then prove that the ratio of the two observation is this much right so एठी देखो दुईटा जेहेतु ऑब्जर्वेशन देइछि ज्योमेट्रिक मीन हला स्क्वायर रूट ऑफ a by b हार्मोनिक मीन हला दिस मच व्हिच इज 2ab by a plus b रिलेशन दे देला gm equal to 1 by n of hm ओके इछि नै सिंपली ई वैल्यू गुडा को हमको पुट करिवार अछि एंड वी ट्राई टू सॉल्व इट फर्दर ओके द सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल एंड इजी सो ए हिसाब रे जदि सॉल्व करछो रिलेशन तमे पाई जिवो फाइनली a is to b और a by b equal to जोटा क्वेश्चन रे कहउछि ओके so moving further finally what is the fundamental inequality of arithmetic and geometric mean of n numbers okay so eta किछि नै सेही inequality greater than or equal to से विषय रे एठी डिस्कशन कराई छि ओके आउ लास्ट रे सिलेक्शन ऑफ एन एवरेज एते जो हमें पढ़िला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो कि एवरेज विषय रे हमें बहुत पढुछु सिलेक्शन माने एठी पॉइंट वाइज केतरा फैक्टर ऊपर डिपेंड करछि से लेखुछि like nature and availability of data nature of variables which are involved then the purpose of inquiry the system of classification which is adopted and the use of the average for further statistical calculations or computations which are required for inquiry in mind okay however arithmetic mean पाई जदि हमें देखिबा ताले it should satisfy almost all properties of an ideal average as laid down by Professor Yule, then it is quite familiar to a layman and it has very wide application in statistical theory purpose. Okay, now there are certain limitations of averages. Okay, you can simply read it out. गुड़ाए limitation को एठी ये point wise देखो बताऊची ओके डिफरेंट एग्जांपल देखी लाइक उर्दू रीडिंग एठी दे देला अरबा ज्यू का त्यों कुनबा डूबा क्यों
सो हिसाब रे ये टेकफुली या बुझे लिमिटेशंस को किंतु मु भावुची ये जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रे जो थे हमें कि पांचटा क्वांटिटी विषय रे देखला लाइक मीन मीडियन मोड देन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन या बेस करी प्रॉब्लम निहाती भाव रे पड़िबो ओके limitations by merits demerits these are all sub your literature types data you can simply read it out मने रखिया पई किंतु बेस करी मेन करी तमरो concentrate करो focus करो in order to solve the problems based on these central tendency जोटा हमें पढ़िला okay so this is all about the harmonic mean okay Thank you.